the ambit of politics. Sanju Verma, Jairam Ramesh went so far as to say that this is a sign of desperation और प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं. You know, we have bigger fish to fry, and Jairam Ramesh is overall not relevant in the larger scheme of things. I will stick to the positive narrative today, taking off from what Harshvardhan Tripathi said. Why is it that the BJP and Narendra Modi is led, entire, system is so confident that इस बार तीसरी बार फिर से मोदी सरकार. This is not some number, अब की बार 400 पार that we are throwing off the hat. अभी 400 के पार जाएंगे या 300 के पार जाएंगे या सिर्फ 272 मिलेंगे. So Sanju Verma, the question is, what did the Prime Minister say? More specifically about what he has said, I want you to answer. पहले जब तक माँ जिंदा थी, मुझे लगता था शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है. मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है. ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है. ये ऊर्जा ईश्वर मुझसे काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दिया है. The question being asked today, including by all the opposition leaders, is what is the point? They are saying this is a God complex. Padmaja, let's be very clear. I don't want to get personal, but Tejasvi Yadav, in a video about a week back, was seen limping. He could not sustain the heat wave. And then you have Rahul Gandhi, who has not done even 1/10 the rallies and roadshows that Prime Minister Modi has done. Prime Minister Modi has given exclusive interviews to more than 57 newspapers and media houses, more than all the Prime Ministers put together in the last 67 odd years, till about 2017. And then we also have Prime Minister Modi. आप देखो कि दिन में एक या दो रोड शो होते हैं, एक या दो रैली होते हैं. वो यदि सुबह बिहार में होते हैं तो दोपहर उत्तर प्रदेश में होते हैं, शाम को महाराष्ट्र में मिलेंगे, and then he's back to Delhi to give bites or a full-fledged interview to somebody. कहने का तात्पर्य ये है that Prime Minister Narendra Modi is bestowed with boundless energy, tireless conviction, and the ability to translate his vision into reality. और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसी दैवीय शक्ति के आशीर्वाद के बिना इतना सारा काम संपूर्ण कर पाना पिछले 10 सालों में, this is next to impossible. I want to just ask you 2 questions. पहले 50-60 सालों में 380 मेडिकल कॉलेज बने और सिर्फ पिछले 10 सालों में 325 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई. पहले 60-70 सालों में 3.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ और पिछले 10 साल में 6.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ. पहले 60-70 सालों में 10,000 किलोमीटर तक का भी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ रेलवे लाइंस का. पिछले 10 सालों में 40,000 किलोमीटर का रेलवे ब्रॉडगेज लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है. What I'm trying to say is that you need a leader who has conviction. You need a leader who does not build flaky castles in the air, who can marry vision with seamless execution. But you also need that third power, the force multiplier, to bless you, and that is all. He's just paying Obi sounds. He's paying.